Good morning, students. Now in the previous video we have discussed about local variables. Now the second type of variable is instance variable. So let us start with the very first point. Instance variable are declared in a class. Local variable are declared inside a method, constructor or block. These are declared inside a class but outside a method, constructor or any block, right? Now second point, when a space is allocated for an object in the heap, a slot for each instance variable value is created. Means what? Whenever you will create an object, then a memory will get allocated to the instance variable. जैसे ही आप मतलब instance variable क्या होता है, कब create होते हैं instance variable? When the object will get created. मतलब जब object create हो जाते हैं memory में, तो क्या होता है, हमारे पास instance variable को भी memory allocate हो जाती है. और जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारे मेमोरी से, तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं उनके थ्रू जो मेमोरी ऑक्यूपाइड होती है दैट विल आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकंड पॉइंट, राइट? नाउ थर्ड वन, instance variables are created when an object is created with the use of keyword new and destroyed when the object is destroyed. Done? Next is instance variable hold values that must be referenced by more than one method, constructor or block or essential parts of an object state that must be present throughout the class. It says what? Instance variable hold values that must be referenced by more than one method. more than का मतलब अगर आपको क्या करना है, if you want to use a value, a class variable by more than one functions or by more than one methods or constructors or any block, then in that case you will use an instance variable, because local variable is having the disadvantage that it can be used only that part of the program where it is declared. जहाँ उसको डिक्लेयर किया है, you can use it only in that block, not outside of it. So to overcome that problem, we use the concept of instance variable, right? सो आपको अगर एक से ज़्यादा में यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? इंस्टेंस वेरिएबल. कंप्लीटेड. नेक्स्ट, इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ क्लास लेवल बिफोर और आफ्टर यूज़. आप उसको यूज़ करने से पहले बाद में कहीं पे भी उसको डिक्लेयर कर सकते हो, बट ओनली इनसाइड अ क्लास. दैट इज़ इंपॉर्टेंट. कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ क्लास लेवल. डन. नेक्स्ट, yes, access modifiers can be given for instance variables. That means we can make it as private, public, protected, whatever we want, but for local variables access specifiers are not allowed. Next is instance variables are visible for all the methods, constructors or blocks in the class. That means inside a class, if we are having two functions, 3 function, 4 function or any if else block or any constructors we are using, so that will get applied, that will get visible to all of them inside a class. Now next is instance variable have default values. We have also discussed this, because local variable do not have their initial values, so but instance variable have their initial default values. For example, for numbers the default value is 0, न्यूमेरिक के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, बूलियन के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ फॉल्स, एंड फॉर अदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस की क्या वैल्यू होती है? नल. ठीक है, जैसे इंटीजर की 0, कैरेक्टर की नल कैरेक्टर होती है, बूलियन की फॉल्स होती है, राइट? और डबल की 0.0 डी और फ्लोट के लिए 0.0 एफ होती है. इन दिस वे एक्चुअली द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर इनिशियलाइज्ड. ऐसे ही ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब हो गया कि मतलब जो रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं जितने भी, दैट वर्क्स ऑन एड्रेस, देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ नल. सो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ रेफरेंस टाइप. जब ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ नल. इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय कॉलिंग द वेरिएबल नेम इनसाइड द क्लास. यानी कि क्लास के अंदर हम उसको कहीं भी उनके वेरिएबल के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट इज़ द लास्ट पॉइंट. Now next, here is one example. Class rectangle. We have declared two variables, length and breadth. That is instance variable, because we have discussed what, that these are declared above all the methods, all the constructors and blocks, but inside a class. तो सारे functions के ऊपर बना होना चाहिए. So length और breadth. Now next is this class declares an object of type rectangle. That means we are making a main function. Inside it we are going to create a object myrect.
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इज इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल एंड वी आर गोइंग टू टेक वन वेरिएबल डबल एरिया, राइट. Then assign values to myRect's instance variable. Now actually this is having the default value when you will create it. So length will contain what, 0.0, and breadth will contain what, 0.0 initial values. Now I want to assign some values to length and breadth. So instance variables can be initialized using object name. So we have already created here object name as myrect. So if you want to access instance variable using object, so you have to use what, dot operator. आपको dot operator का use करना पड़ेगा. तो आप क्या लिखते हो, object का name dot and variable का name. So myrect dot length is equal to 10. In the same way if you want to assign breadth, तो आप क्या लिखोगे, myrect dot breadth is equal to 10, right. Now after writing this, see here we have done this and this, ये दोनों हो गए. नाउ हमें क्या करना है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. आई कैन नॉट राइट हेयर डायरेक्टली लेंथ इंटू ब्रेथ. आई कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला हेयर लाइक दिस. आई कैन यूज़ इट यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम ओनली. हम सिर्फ ऑब्जेक्ट नेम को यूज़ करके ही इसको कर सकते हैं एक्सेस, ठीक है. सो माई रेक्ट डॉट लेंथ इंटू माई रेक्ट डॉट ब्रेथ. सो वॉट इज द वैल्यू फॉर दिस, दिस इज 10 and here this is what, 10. 10 into 10 is 100. 100 will get assigned to this area. Now you know what, area is of type double. So area of rectangle, when it will get printed, so what will be the answer, 100? Will this be answer? Yes or no? No, 100 will not be the answer. Reason? Because area is of type double. So it will give you what, 100.0000 up to 8 decimals, right? So this will be your output for instance variable. Now next is here your class variables or static variable. Now class variables, also known as static variables, are declared within the with the static keyword in a class but outside a method, constructor or a block, right. Means जैसे आप instance variable declare करते हो, in the same way you will declare the class variable but with the keyword static. That means you have to use the keyword static. Now so for example like instance variable, if you want to create, you will write like this, int I. ये क्या हुआ, एक इंस्टेंस वेरिएबल है जो क्लास में आप डिक्लेयर कर रहे हो. एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट एज क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, सो यू विल राइट व्हाट, स्टैटिक बिफोर इट. नाउ दिस विल बिकम व्हाट, स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल. मूविंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट, देयर वुड ओनली बी वन कॉपी. most important point, this, there would be only one copy of each class variable per class regardless of how many objects are created from it. Means we know what class is object vectoring. Means we can create any number of objects for a single class. But in case of instance variable, actually when you will create 10 objects, and suppose if you have defined one variable inside a class, int I, right, and if you will create 100 objects for it, so 100 different memory locations will get created for a single variable I. जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए सब के लिए अलग अलग कॉपी बनेगी इंस्टेंस वेरिएबल आई के लिए. बट इन केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल ओनली वन कॉपी विल गेट क्रिएटेड irrespective of the number of objects. कितने ही ऑब्जेक्ट्स हो हमारी क्लास में, डजेंट मैटर, regardless of all the number of objects, only one copy, that means one location will get created for a instance, for a static or class variable. Next point, static variables are rarely used other than being declared as constants. Means constants declare करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब constants के साथ हम डिक्लेयर यूज़ करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं. कॉन्स्टेंट्स आर वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, प्राइवेट, फाइनल और स्टैटिक. ठीक है. कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स नेवर चेंज फ्रॉम देयर इनिशियल वैल्यू. नेवर चेंज फ्रॉम देयर इनिशियल वैल्यू. कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ कौन से होते हैं, हुज वैल्यूज़ कैन नॉट बी
चेंज्ड. सो हम कह सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ यूज़ हो सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज, but that is not much more important point. These two are important. If your question will come in the exam, so these 2 points are sufficient to write. ठीक है. Now next is static variable are stored in the static memory. It is used to use static variables other than declared final and uses private or constant. So this point also you can leave because you don't know what is the static memory and all this, so it's better to leave. So only 2 points are here that is important from the perspective of your class or static variable. ठीक है. अभी नेक्स्ट में देखो एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले some more points. Static variables are created when the program starts and destroyed when the program stops. ठीक है. जैसे local variables कब create होते हैं? When you will enter into a particular body and it will get destroyed when you will come out of that body wherever it is defined, right. Instance variables are created when an object is created and destroyed when an object will get destroyed from the memory. Static variables are created when the program starts and destroyed when the program gets stopped. Now next is visibility concept is same in that means for both instance and class variable. Next, default values are also same as that of the instance variables. Next, static variables can be accessed by calling the class name. Yes, that is again the important point here. Mark this point. Static variable can be accessed by calling the class name dot variable name. Generally, instance variable को use करने के लिए how we use it, we write object name dot instance variable name. But if I want to use a static variable, so how should I write it? I will write the name of the class dot and then the variable name, because static variable are actually the class variable, so it doesn't depend on the number of objects. ये objects के according create नहीं हो रहे हैं. हमारे एक class के लिए आपके पास क्या होगा, number of objects पे कोई मतलब dependent नहीं है static variables, ठीक है. so ये that is dependent on your class. So for class actually static variables are going to be created, not for any special object. So that's the reason we access it in this way, class name dot variable name. Now next, and do not get confused here, just with the help of example we will try to understand it. Now next here, yes, example. Now public class employee, salary variable is a private static variable. Now we have created one salary variable of double type. Look at here, salary is a variable of double type. Before that we have applied a keyword static. It means it is a static variable and we have declared it as private. Private हमने it's not mandatory to write it. If you want to make it public, you can write public or default, whatever it is, ठीक है. But यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसको private बना दिया है. Now next is department is a constant, means we are going to declare a variable नेम इज़ डिपार्टमेंट. किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू. उससे पहले हमने क्या लगाया है, स्टैटिक फाइनल, और यहाँ पे लिखा है पब्लिक, यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक है, इसका कहीं पे भी यूज़ हो सकता है. स्टैटिक का मतलब ये एक क्लास वेरिएबल हो गया है. एंड फाइनल मीन्स व्हाट, फाइनल क्या होता है, टू डिक्लेयर द कांस्टेंट वैल्यूज. इफ़ यू वांट दैट योर वैल्यू इन अ वेरिएबल शुड नॉट गेट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, देन यू विल मेक इट एज final. So final keyword is mainly used to declare constant. So here department is constant because by using final keyword. Final keyword ही क्या है हमारा, constants को define करने के लिए, ठीक है. So if you want that throughout the program execution the value of any variable should not get changed, then you declared it as final. Now one more thing is, you cannot write final at in place of static and static in place of final. This is the way, and you have to write in this way only, right. Now next is public static void main salary. You are going to initialize salary equal to 1000 and here you are going to print the value. So it will directly print what, department. department की value कितनी है, development. So answer will be what, development. यहाँ पे लिखा हुआ आएगा development, average salary and 1000, ठीक है.
here it is given. This is your answer. Right, and here it is the summary whatever we have studied about your local instance and class variable. So here you can watch out where declared. There are some points, just summary points. Use, its lifetime, कब तक ये memory में रहेगा, then how to declaration and the initial, what are the initial values of it, and this access from outside. So this is only the summary, no need to go through in detail this much, because static and instance variable, the question will come hardly in 2 marks, not more than that. So for 2-3 marks, if the question will come only for just one topic, like what is static variable, give one example, so you can give this example, right. So just for 2 marks you have to study this, 2 or 3 marks. So इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको. आपको पॉइंट्स, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्टैटिक वेरिएबल्स के 2-3 पॉइंट्स यू शुड नो, मेन पॉइंट्स यू शुड नो अबाउट स्टैटिक वेरिएबल, अबाउट इंस्टेंस एंड अबाउट लोकल वेरिएबल एंड द डिफरेंस अमंग ऑल दीज 3, right. So that's what enough for today. So thank you.